Okay. Assalamu alaikum, students. Okay. So you have revised the last class we did on Friday. So Friday कुछ problem solve कर रहे थे. You have any doubts? Okay. So question is here only. Okay. So today we will finish the chapter. Okay. We'll discuss statement based questions and like assertion reason type of questions we'll discuss. Okay. Take down the question. The dimensions of the ratio of magnetic flux. Okay. The dimensions of the ratio of magnetic flux and permeability are.
and permeability R. So what is the symbol of permeability? Mu. ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? डायमेंशंस ऑफ द रेशियो. देखो इस दोनों का भी फ्लक्स और म्यू का रेशियो पूछ रही. ओके, सो ऑप्शंस आर okay, M L T A M0 L1 T power 0 A power 1. Option B is M L T A M0 minus 3 0 1. Okay, option C is okay. So out of this four option, which is the correct one? See, we have to find out magnetic flux, then we have to find out okay mu. What is mu? Permeability. तो magnetic field में use करना पड़ता. Okay. So first we have to find out the flux. क्या बोले? Any doubts? Okay. So what is basically flux? जैसे कि you have studied the electric flux in first chapter. What is electric flux? Yes, number of electric fields are passes through the given cross sectional area is called as okay. But यहाँ पर magnetic flux BA हो जाता है. B for magnetic field and E for electric field. Okay. So flux which is equal to, अब यहाँ पर magnetic field का फार्मूला लिखना. Okay. So magnetic field का फार्मूला बनता है okay, B which is equal to okay, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनता है म्यू नॉट आई बाई 2 pi r. Okay, so again we use this. Okay, so magnetic field is F which is equal to BQV sin theta. F equal to BQV sin theta बनता है. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लियो. So magnetic field which is equal to F by QV. So is substitute here. Okay, इसमें substitute करो. So flux which is equal to B के जगह F by QV into A. Correct. So यहाँ पर so flux which is equal to force mass into acceleration. तो mass का dimension 1. Correct. तो लाइन लेंथ का डायमेंशन 1 t पावर -2. एरिया इज a स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2 इज 3 हो जाता है यहाँ पर. ओके, बिकॉज ऑलरेडी लेंथ का डायमेंशन 1 था. ओके, q. सो i इक्वल टू q बाई t. सो q इक्वल टू i इंटू t हो जाता है. इन द प्लेस ऑफ q आई कैन यूज i इंटू t और दिस इज वेलोसिटी. ओके, l t पावर -1. ओके, सो यहाँ पर so flux which is equal to m power 1 l power 3 t power -2. okay, so देखो यहाँ पर ये -1 -2 क्या -1 बच को रहता है. तो यहाँ लेंथ के ऊपर 1 रहता है, ये कैंसिल रखो 2 रहता है. ओके, कौन सा बोलो? हाँ, तो यहाँ पर t पावर +1 ये -1 कैंसिल नहीं होता. इसका डायमेंशन 1 +1. ओके, सेम रहना, कैंसिल होने के ऊपर भी माइनस नीचे भी सेम रहना, देन विल कैंसिल. ओके, अब यहाँ क्या बच को रहता है? दिस इज 2 m1 l पावर 2 t पावर -1. ओके,
तो एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, तो टी पावर 1, ओके, तो ये तो कैंसिल होकर रहता है. सो फ्लक्स विच इज इक्वल टू m power 1, okay, so L2 t power minus 2 a power minus 1, correct? So this is the dimension formula for flux, okay. Ab dimension formula for mu, so here I write this, okay, so f b which is equal to mu naught I divided by 2 pi r, यहां से म्यू नॉट का फार्मूला निकालो. सो म्यू नॉट विच इज इक्वल टू, ये r इज 2 pi इज कांस्टेंट, बिकॉज हम डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, ओके. सो b, ओके, b इंटू r डिवाइड बाई i, ओके, ऑलरेडी b वी नो दैट, तो b का फार्मूला यहां देखो, b का फार्मूला यहां पुट करो, ओके. सो f by qv into I into r, okay. So mu naught, instead of talking and don't waste your time, at least you can solve the problems. बात करने आता है क्या? So what is force? Force is mass into acceleration, that is mass 1, length 1, t power minus 2. फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, और r मीटर में मेजर करते हैं, दिस बिकम एस 2 डिवाइड बाय q क्या होता है, I इंटू टी. सो एम्पियर, ओके, टाइम पावर 1, ओके, v मीटर पर सेकेंड, ओके, बिकॉज v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां पर डिस्टेंस को लेंथ पावर 1, टाइम को आको टी पावर माइनस 1, यहां पर यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, तो ऑलरेडी यहां पर एम्पियर आता है, एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ओके. अब क्या क्या कैंसिल होता है देखो, ओके, तो एल पावर 2 रहता है, यहां पर 1 बच को रहता है, ये कैंसिल होगा, दिस बिकम्स माइनस 1. सो म्यू नॉट विच इज इक्वल टू m पावर 1, ओके, l पावर 1 t पावर माइनस 1, ओके. तो ये बीटा है तो माइनस 2 हो जाता है, देखो ये प्लस 1 ऊपर है तो माइनस 1, ए पावर माइनस 2, ओके. अब यहां पर वी हैव टू टेक द रेशियो, दोनों का रेशियो लेना, ओके. रेशियो ले तो डिवाइड करो, देखो व्हाट इज आंसर, देखो इसका भी और इसका रेशियो लियो, देखो अब रेशियो लेने से m पावर 1 m पावर 1 कैंसिल हो जाता है, ओके. तो यहां पर कैंसिल होकर यहां 1 बच को रहता है, ओके, दिस विल गेट कैंसिल, ओके. तो ये पावर माइनस 1, ये पावर माइनस 1 ऊपर है तो ये पावर प्लस 1 हो जाता है, करेक्ट. तो यहां पर ए पावर प्लस 1, ओके. व्हाट इज आंसर, मास का डायमेंशन नहीं है, लेंथ का डायमेंशन 1 हो जाता है, टाइम का डायमेंशन 0, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ओके. देखो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम तुम्हें कंपलसरी एक क्वेश्चन आता सुना, एवरी ईयर नीट और सीटी वन क्वेश्चन विल कम बेस्ड ऑन दिस, दैट्स व्हाई आई एम ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स के बराबर आता है. डोंट टेक इट लाइटली, वट एवर द प्रॉब्लम गिविंग, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. खाली फार्मूला लिख लियो, okay. Only flux which is equal to b dot a, you write only the formula, don't write mlt, you can solve it later. अब पूरा कर लग बैठे तो 15-20 मिनट हो जाते हैं, ओनली द मेन फार्मूला लिख लेना, फ्लक्स का फार्मूला क्या बनता है, ओके. दिस फार्मूला यू विल स्टडी लेटर, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म मैटर जो चैप्टर आते नहीं, वहां पर ये सारे फार्मूलास में स्टडी कर सकते हैं. हेलो, वालेकुम सलाम, क्लास में, क्लास में, ओके. Okay, done.
क्या बहुत कम दिख रही बॉयज सर? सी हैव टू कम रेगुलरली, कौन से भी क्लास फंदे मिस नहीं करना तुम्हें, रेगुलर आए करके बोले समझ में आता है। अब एक क्लास को आना दूसरे क्लास को नहीं है करके बोले तो बिकॉज यू कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लास वी आर टेकिंग। फिजिक्स में कौन से एक क्लास में मिस करे तो भी समझ में नहीं आता। इफ यू मिस वन टॉपिक ऑल्सो कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। छोटा है तुम्हारा तुम्हारा माइंड एक सेकंड को डाइवर्ट हुआ तो भी समझ में नहीं आता तुमना। अब क्लास 1.5 घंटे ही करके बोले तो जब तक क्लास चलते ओके यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू हैव टू फोकस। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Dimension formula for pressure gradient. Okay, the dimensional formula for pressure gradient. The last class also I told you. So what is the meaning of gradient? Yes, लेंथ से डिवाइड कर लेना। ओके, जो भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पूछती है उससे क्या करना, लेंथ से डिवाइड कर लेना। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ओके, तो कौन सा प्रेशर ग्रेडियंट? तो जल्दी फाइंड आउट करके बोलो आंसर, यू हैव टू सॉल्व नाउ। I'll write only options, तुम्हें आंसर बोलना है इसका। अब I think we have done many questions based on this. Option option B. Okay. So how many of them getting option B? Only two others. ओके, व्हाट बेसिकली क्या होता है प्रेशर? तो प्रेशर दिमाग में रखना। ओके, मतलब पर्सनल प्रेशर नहीं है, फिजिक्स का प्रेशर याद रखना। व्हाट इज प्रेशर फार्मूला? करेक्ट, फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका डायमेंशन फार्मूला निकालो, मास, लेंथ और टाइम। ओके, मास का डायमेंशन 1, लेंथ 1, टी पावर -2। ओके, अपन एरिया, एरिया का एल स्क्वायर। तो ऊपर आया तो एल स्क्वायर रहता है, तो दिस विल गेट कैंसिल, 1 रहता है। सो पी विच इज इक्वल टू मास का डायमेंशन 1, ये ऊपर आया तो एल पावर -1 हो जाता है। करेक्ट, एंड टी पावर -2। सो दिस इज फॉर ओनली प्रेशर, बट द क्वेश्चन इज ग्रेडियंट। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट का तो क्या करना, पी बाई एल। ओके, सो विच इज इक्वल टू मास 1, ओके, टी पावर -2। अब ये लेंथ को ऊपर ले गए तो +1 है, सो -1 हो जाता है, दिस बिकम्स -2। ओके, सो m पावर 1, l पावर -2, t पावर -2 इज द आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ करंट। द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, in terms of current,
You know what is electromotive force? Correct. Okay. So electromotive force, what is the definition of EMF or electromotive force? थर्ड चैप्टर में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. सो व्हाट इज ईएमएफ फार्मूला? देखो ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? ओके अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके अब समझो ये टेस्ट चार्ज रहता है, इन्फिनिटी में रहता है, और यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रहता है. ओके ये टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज क्या करता है, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है. द सोर्स चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह, जैसे कि अर्थ के सरफेस में ग्रेविटेशनल फील्ड है, wherever the mass of the body is there, it will create a gravitational field. Okay तो ऐसा ये जो सोर्स चार्ज है आसपास क्या करता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है. अब ये टेस्ट चार्ज को तुम्हें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पी पॉइंट के ऊपर लेकर आने से इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ता है, तो इस वर्क डन को वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके सो V which is equal to work done per unit charge, this is the formula we are using. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो कहां से कहां लेकर आ रही, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट. ओके अब इसे बोलते हैं हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके एंड व्हाट इज ईएमएफ? देखो ईएमएफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है. ओके सो विल टेक दिस प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस. ओके सो दिस इज वोल्टेज, मतलब कुछ भी ये बैटरी या सेल ले लेती. ओके तो इसे हमें जो भी बैटरी रहता है 9 वोल्ट बोलते नहीं. सो दिस इज ईएमएफ वैल्यू. अब जैसे एग्जांपल कुछ भी रिमोट सेल रहता है या कुछ भी हमें बैटरी यूज करती. ओके तो बैटरी का जो भी वैल्यू रहता है उसे क्या बोलते हैं, हमें ईएमएफ बोलते हैं. ओके अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम्हें दिस इज वी कैन टेक एक्स एंड वाई, या रेजिस्टर को कनेक्ट करें या कुछ भी एक वायर या बल्ब को कनेक्ट करें हमें यहाँ पर. ओके तो बैटरी को कनेक्ट करें तो बल्ब ग्लो हो सकता है. करेक्ट. ओके द फ्लो ऑफ चार्जेस एक्चुअली क्या हो रहा है अगर बोले तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर क्या रहती है, इस टर्मिनल में दर द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रहती है, नेगेटिव चार्जेस रहती. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में बहुत सारे इज केमिकल आयंस रहती, तो यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पूरे नेगेटिव चार्ज रहती. ओके अब जैसे हमें एक वायर को यूज करें, वी आर कनेक्टिंग द वायर. ओके द पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो थ्रू द एक्स वाई वायर, कंडक्टिंग वायर. ओके अब देखो इस जब यहाँ चार्ज फ्लो होती, जो भी चार्ज इस पूरे सर्किट में फ्लो होता है, इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है. चार्ज के ऊपर वर्क डन, एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है हम पर क्या होता है, वर्क डन. व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क डन? बेसिक फार्मूला एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कुछ भी चीज रहने या चार्ज रहने या एनी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह, तो हम पर क्या होता है, वर्क डन होता है. गॉट इट. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चार्जेस जैसे हमें इस बैटरी को एक कंडक्टर के साथ, एक रेजिस्टर के साथ, एक वायर के साथ कनेक्ट करती. ओके तो भाई यहाँ क्या हो रही, द चार्जेस विल passes through the circuit, the whole circuit. तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक जब ये चार्ज फ्लो होती है, उस चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है. तो ये वर्क डन कुछ हमें क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलती हैं. ओके व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज होल सर्किट, मतलब इस पूरे सर्किट में चार्ज को मूव करने में जो भी वर्क डन होता है, दिस इज कॉल्ड एज ओके ईएमएफ. समझ में आ रहा है? ईएमएफ का मतलब क्या, इस पूरे सर्किट में चार्ज को चलाना, उस टर्म को ईएमएफ बोलती हैं. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ओके मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आना, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके बट दोनों का फार्मूला सेम बनता है. देखो यहां पर भी ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. करेक्ट. तो यहां पर ईएमएफ के लिए यू यूज करती, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी यूज करती. तो चार्ज इन्फिनिटी से एक पॉइंट को लेकर आने वर्क डन होता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलती हैं. इस पूरे सर्किट में चार्ज को लेकर जाने में जो भी वर्क डन होता है, उसे ईएमएफ कर को बोलती है, कॉल्ड एज ईएमएफ. देखो वहां पर भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वहां पर वी डिनोट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर ई डिनोट फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल. गॉट इट. जब तुम्हारा थियरी रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन डिटेल विल एक्सप्लेन. ओके जैसे तुम्हारा ये सीटी का एक 2-3 मंथ्स हो जाता है, देन विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बेसिक्स एवरीथिंग. ओके तो यहाँ पर ईएमएफ निकालना समय, देखो ईएमएफ का फार्मूला यू नो दैट, फाइंड आउट करके बोलो आंसर. ओके वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज. कैलकुलेट करके बोलो, आई राइट द ऑप्शंस. Okay. Okay, first option is, let me check. Okay,
सो यहाँ पर हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ वालेकुम सलाम सर. जी सर. यस सर. ओके सर. ओके डन. ओके सर. Okay. So what is the third option? Which one? Okay. I I think fourth option. M L square T power minus 3 A power minus 1. T power plus 2 आ रहा है. M T power minus 2 A power minus 2 ML square T power minus 2 A square ML square T power minus 2 A power minus 2. हाँ, these are the options. क्या मिल रहा ऑप्शन तुम ना? Okay. Okay. So इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं है? Okay, let me check this. E which is equal to work done is force into displacement upon I into T. आप चेक करो. See, when you are substituting, you have to take the proper formula. If you are miss one term also, B or D. Okay, got it. So यहाँ पर E equal to force into displacement Q is I into T. You know after how to do it, right? Last bench, no response. Everybody तुम्हारा प्लेट को देख रही ना, सबको भी बोल रहा हूँ सो. Done? Okay. We'll move to the next question. Okay. If C be the capacitance, V be the electric potential. So what is C? What is V? Yes. C be the capacitance and V be the potential. Okay. Electric potential
The dimension formula for CV square. So CV square का dimension formula calculate करना. Okay. So first you can find out the capacitance. Okay, I'll give how to write this. C equal to Q by V. Capacitance use करो यहाँ से. And V, what is V equal to? Work done per unit charge. Okay, solve this. I'll give only questions. You have to solve the problem. Yes, Q. Small q or capital Q, same thing. Yes, yes. Okay. Which is the correct option? You have to make it V square. वालेकुम सलाम सर. सर आप कुछ बोल रहे थे सर. ओके ओके म्हणजे आवाज नहीं आ रहा सर. आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर. ओके ओके ठीक है सर. ओके. So which is the correct option? You got the answer? Okay. Solve करने क्या ये? Anybody want to solve this? You have any doubts? Otherwise, I'll go to the next question. Okay. The dimension formula of. Okay. So C equal to I into T upon V. So it is potential, right? So potential is work done per unit charge, correct? Okay, C which is equal to I is ampere, I for idiot for ampere. Okay, again T is time, so time power minus 1. Again Q is I into T. Okay, so work done is force into displacement. C which is equal to, okay, so I आया तो ampere, so ampere into ampere becomes ampere square. ओके यहां पर टाइम टी स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट. फोर्स m1 l2 t power minus 2. This is C. Okay, if you want to still it is simplify,
C which is equal to m power minus 1. Okay, so L square, L power minus 2, when you take it to the numerator. So minus 2, if you take it here, t power 4, already 2 hai. Okay, a power a square. So this is capacitance unit dimension formula. Okay, now we have to take for, okay, V. So V which is equal to work done. Okay, so work done into displacement. So work done is m1 L2 t power minus 2. Okay, Q is I into T. So ampere t power 1. So V which is equal to m1 L2 t power minus 3, ये ऊपर गया तो a power minus 1. So this is, okay, V square, इसे square कर लियो. तो this is 2 4 6 minus 2. Okay, now CV square. So CV square which is equal to, so CV square देखो, अब मल्टीप्लाई पावर. ओके व्हेन, सो यहाँ पर 2 minus 1 m power 1. देखो इससे भी सी वी स्क्वायर दो को भी मल्टीप्लाई करना. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग द बेस, पावर विल बी एडेड बिकॉज द बेस इज सेम. मास लेंथ टाइम ए, मास लेंथ टाइम ए, all are same, the power base is same, the power will be added. So here per plus 2 minus 1 is plus 1. Okay, yeah, plus 4 minus 2 is plus 2. Okay, time minus 6 plus 4 is minus 2. Okay, so this will become a 0. Minus 2 plus 2 is 0. Now you check me the answer. Check out this answer. M per 1, L per 2, T per minus 2, A per 0. Correct? So dimensionally it is correct. Okay. Next question. Okay, question number 5. The dimensional form of physical quantity is, okay, the dimension form of physical quantity is M, L, T, A, B, C. Okay, see, they have given some unknown physical quantities given. The power is A, B, C. Okay, so we have to find out. Okay, then that physical quantities, मतलब ये कौन से physical quantity का बोल को calculate करना. Okay, so option A is surface tension. Surface tension A, B, C. Okay, so the values are 1 1 2 1 1 2. Okay, option B is force. Force A, B, C. मतलब यहां पर एक्चुअली डायमेंशन आते हैं यहाँ ए बी सी के जगह, तो कौन सा डायमेंशन ए बी सी के बराबर आ सकता बोल को फाइंड आउट करना. सो सी दे हैव गिवन फिजिकल क्वांटिटी आल्सो एंड दे हैव गिवन ए बी सी आल्सो. जस्ट मैच हियर व्हाट इज द डायमेंशन. ओके, देखो ए मतलब ये जगह कौन सा ए बी सी की जगह क्या आना बोल को कैलकुलेट करना तुम्हें. A1, B1, C2. Third option is angular frequency. Okay, so what is the angular frequency? Omega. So A, B, C. 0, 0, minus 1. Option D is spring constant. Spring constant K. A 2 pi f. Omega equal to 2 pi f or 2 pi by T, because the frequency is reciprocal of time period. Option, yes, this is correct. Okay, so here you can write this.
ओके इसका डायमेंशन 0, इसका डायमेंशन 0, टी का डायमेंशन 1। बिकॉज अब तुम्हें सरफेस टेंशन लिए तो ये मैच नहीं होता तुम ना। व्हेन यू टेक द सरफेस टेंशन, ए का डायमेंशन 1, बी का डायमेंशन 1, सी का डायमेंशन 2, इट विल नॉट मैच। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शन एनी one dimension will match, that is option C. Got it? You have to substitute all the 4 formulas. ऐसा नहीं खाली एक सब्स्टिट्यूट कर दे आंसर नहीं मिल रहा। You substitute all the 4 formulas, then you have to cross verify. Okay, तो कौन सा डायमेंशन को कौन सा मैच हो रहा बोल को तुम्हें चेक करना। So here A is 1, B is -1, -2. Okay, अब इसका सरफेस टेंशन क्या आता है? What is surface tension? फोर्स पर यूनिट लेंथ। एरिया आ गया तो प्रेशर हो जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज ओके सरफेस टेंशन। ओके अब यहां पर देखो तुम ना, लेंथ का डायमेंशन 1, सो यू विल नॉट गेट दिस वन करेक्ट। तो इसका मास, लेंथ और टाइम, फोर्स में आपको क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन टी पावर -2, तो ये 0 हो जाता है। देखो ये इज 0, ए इज 1, बी इज 0, सी इज -2 करेक्ट। ए का डायमेंशन 1, बी का डायमेंशन 0, सी का डायमेंशन -2। ओके नेक्स्ट you can take force. Okay, force equal to mass into acceleration. So mass, length और time. So mass is 1, acceleration is 1, t power -2. तो ये बनता है a का डायमेंशन। So this is for dimension A, this is for dimension B, this is for dimension C. देखो यहाँ पर A B C, बट यहाँ पर पूरा हम +2 है, यहाँ पर -2 है, तो ये भी मैच नहीं होता और ये भी मैच नहीं होता। गॉट इट? सो नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी यू कैन राइट, और ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ यू कैन राइट। यहाँ पर 2 पाई इज कांस्टेंट, 1 by t, 1 by t is nothing but t power -1। समझ में? हाउ यू गॉट द आंसर? यू अंडरस्टूड? ओके यहाँ पर देखो एंगुलर, ओके सो एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द फार्मूला। क्या मैम? तो स्क्रीन और बड़ा करना। ओके और मतलब और ज्यादा बड़ा लिखना क्या? ओके गॉट इट? सो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, सो दिस इज द फार्मूला। अब देखो यहाँ पर 2 पाई बाई टी आया, यानी आई टेल यू हाउ वी गॉट दिस आंसर। So what is omega is angular velocity. What is angular velocity? Angular displacement upon time taken. Okay, जैसे कि अब एग्जांपल, if the body is moving along a circular path, अब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, जैसे कि फैन, जेंट व्हील या कुछ भी बॉडी इज मूविंग along a circular path. Okay, अब देखो दिस इज इनिशियल पॉइंट ए करेक्ट। अब देखो ये पूरा दिस बॉडी इज ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनाने में कितना एंगल लेता है? सो 2 पाई। a body to move a complete angle is पूरे complete circle के लिए, so what is the total angle? 360 degree, 360 degree equal to 2 pi radian में। okay, अब थीटा के जगह क्या लिखना तुम्हें? so omega which is equal to 2 pi by t, so this formula only I have written here। देखो ये दोनों सेम फार्मूला, तुम्हारा बेसिक फार्मूला आ गया तो अदर थिंग्स यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके अब यू नो द अनदर फार्मूला, ओके फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, जहां पर आर टाइम पीरियड होना अगर बोले तो ओके टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कुछ भी ले सकती हैं आप। ओके सो इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर, हम पर टी आ रहा है, सो 1 by t इज एफ, तो 1 by t किसके एफ के बराबर आ जाता है? 2 पाई एफ हो जाता है। अब ये जगह 2 पाई इज कांस्टेंट, जस्ट इग्नोर इट। ओके फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आता है? 1 by t। ओके 1 by t इज नथिंग बट t पावर -1, तो यहां पर a0, ओके सो यू राइट हियर मास, लेंथ एंड टाइम। देखो इस फार्मूला में कुछ भी मास 0 दिख रहा है, लेंथ 0 दिख रहा है, t पावर -1। ओके दिस बिकम एज ओके a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a का 0 आ रहा है, b का 0 आ रहा है, c का -1 आ रहा है, सो ऑप्शन c इज करेक्ट वन। ओके यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी स्टेप, देन यू हैव टू कैलकुलेट। गॉट इट? ओके next question. Okay, the physical quantity is denoted by
Okay, the physical quantity is denoted by option is mass into pressure. Mass into pressure upon density. ये किसके बराबर हो सकता है? इज ओके द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी देकर ही मास प्रेशर डेंसिटी, तो ये किसके बराबर हो सकता है? ऑप्शन ए इज फोर्स, ऑप्शन बी इज एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम सिंबल? एंगुलर मोमेंटम सिंबल L. P is the linear momentum. So L equal to P into R. Angular momentum का symbol. Okay. So option C is work. W. Option D is momentum. So what is the symbol of momentum? P. Okay. So out of this, which is the correct option? Mass per unit volume. Okay. समझ में आया? देखो इसे सिंप्लीफाई करें तो इसमें आउट ऑफ 4 विच इज द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज यहां पर देखो मास प्रेशर डेंसिटी. ओके इसमें एंगुलर मोमेंटम का टर्म तो बिल्कुल नहीं आ सकता. बिकॉज व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज रोटेशनल मोशन. करेक्ट. बट यहां पर कौन से भी टर्म रोटेशनल मोशन का हमें सिंबल फिजिकल क्वांटिटी यूज नहीं कर रही. व्हाट इज रोटेशनल मोशन में क्या क्या क्वांटिटीज आती? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन, फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. सो ऑल द टर्म यहां पर कुछ भी नहीं है. ओके एक तो बी तो नहीं हो सकता. आउट ऑफ दिस 3 कौन सा ले सकते हैं? बिकॉज यहां पर प्रेशर है, यहां मोमेंटम है. देखो ये भी नहीं आ सकता. ओके तो ये और सी में दो में कौन सा तो एक ऑप्शन बन सकता है. तो ऐसा तो मैं गेस कर लेना. इंस्टेड ऑफ यूर सॉल्विंग ऑल, चेक द फार्मूला एंड चेक द ऑप्शन. तो चेक कर को सॉल्व करते विल गेट द आंसर विच इज द करेक्ट वन. यस समझ में हाउ टू सॉल्व दिस. ओके सो मास इंटू प्रेशर. यहां पर देखो मास इंटू प्रेशर अपन व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. करेक्ट. तो मास मास कैंसिल करो. ओके सो कैंसिल दिस. ओके सो प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम. तो एफ इंटू वी बाई ए हो जाता है. एफ इंटू करेक्ट. तो वी ऊपर चले आता है. यस सर नो. सो यहां पर फोर्स वॉल्यूम इज बिकम एस. ओके वॉल्यूम क्या हो जाता है? यस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है अपॉन एरिया. बिकॉज वॉल्यूम बोले तो 3 डायमेंशन मीटर क्यूब. ओके अब यहां पर एरिया इसका, तो एरिया इसका मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. ये 2 कैंसिल हो जाता है. सो एफ इंटू एच इज नथिंग बट हाइट. तो हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट एक्स. ओके एफ डॉट एक्स इसके बराबर आता है. वर्क योर आवर. दिस इज द आंसर. व्हाट इट क्लियर? We'll go to the next question. Okay, pressure gradient has the same dimension as the top. Pressure gradient has the same dimension as the top. Pressure gradient has the same dimension as the top. देखो इसे एक शॉर्टकट बोल तू मैं. प्रेशर ग्रेडियंट को राइट एज पीजी. बट यू डोंट राइट फॉलो दिस वन बिकॉज वी डोंट हैव ए टाइम. पूरा लिखने का टाइम नहीं रहता है. तो प्रेशर ग्रेडियंट को सेम लिखता हूं. ओके सो प्रेशर ग्रेडियंट हैज द सेम डायमेंशन एज द टॉप. तो ये किसके डायमेंशन के बराबर हो सकता है? ओके सो ऑप्शन ए इज वेलोसिटी ग्रेडियंट vg.
ओके, ऑप्शन बी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखो ये पर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये पर ये आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट. ऑप्शन सी इज एनर्जी ग्रेडियंट. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. ये कौन सा? दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. सो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब क्या? वर्क डन, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. ओके, वर्क डन पर यूनिट लेंथ. Okay, so if you substitute all the formulas, you'll get, okay, which one? Potential gradient. Sorry, pressure gradient. इसे क्या बोलते हैं हमें? Okay, pressure. What is? Okay. अब पहले मैं प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना. सो व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? सॉल्व करनी है, सॉल्व करना है? कर रही तुम्हें? ओके, सो P विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, ग्रेडियंट बोले तो डिवाइड बाई एल. आई गिव द फार्मूलास. मैं फार्मूला तुम्हें डालता हूं, तुम्हें सॉल्व करना है. वेलोसिटी ग्रेडियंट, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी? Displacement upon time taken upon length. Okay, what is potential gradient? Okay, work done per unit charge upon length. Okay, तो यहां पर एनर्जी ग्रेडियंट. सो वर्क डन पर यूनिट लेंथ. आई हैव गिवन ऑल द फॉर्मुलास. कैलकुलेट करो और पहले प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालना तुम्हें. तो निकाल को, उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, तीनों का भी कंपेयर करो. तीनों ऑप्शन में से कौन सा तो एक मैच होता है. अगर तीनों भी मैच नहीं हुआ तो फोर्थ ऑप्शन. गॉट इट? चेक एंड टेल मी द आंसर. सॉल्व करके बोलो. तीनों में कौन सा तो एक मैच होना. नहीं हुआ अगर बताओ. नन ऑफ दिस. लेट मी चेक द ऑप्शन. Yes. So none of this. Fourth option. Okay, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है? मास, लेंथ, टाइम. एल पावर 1, एल पावर -2, टी पावर -2. पूरा सॉल्व कर देना. सो ओके, नेक्स्ट. अब हम ना ये मैच होना. देखो ये जो आंसर के साथ ये तीन ऑप्शन में कौन सा तो एक मैच होना. ओके, सो व्हाट इज दिस? मास, लेंथ और टाइम. तो वेलोसिटी क्या होता है? ओके, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो 1 टी पावर -1. ओके, ये +1 ऊपर गया तो -1 हो जाता है. सो दिस बिकम अ 0. ओके, ये ऑलरेडी 0 होता है. टी पावर -1, तो ये मैच नहीं हो सकता. खाली टी पावर -1 हो सकता है. ओके, नेक्स्ट वन. सो वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ओके, दिस इज स्क्वायर आई इंटू टी. अच्छा, इसमें देखो क्यू एम्पियर आ रहा है, बट वहां पर एम्पियर नहीं है, तो डायरेक्टली इसे कैंसिल कर डालो. तो ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज क्यू इज क्यू इक्वल टू आई इंटू टी. एम्पियर आ रहा है, देन नो नीड टू सब्स्टिट्यूट. सो यहां पर अगेन वर्क डन. ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ. तो ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ फोर्स बच को रहता है. तो ये भी नहीं हो सकता, खाली फोर्स बच को रहता है. सो द फोर्थ ऑप्शन इज डी, करेक्ट वन. So next question. Force and density are related.
Okay, force and density are related. F equal to alpha plus beta plus under root of d. Okay, then find the dimensions of a, मतलब अल्फा, अल्फा का डायमेंशन लेना. ठीक है, सो ऑप्शंस आर, ओके ठीक है, बट ऑप्शन लिखने के वास्ते टाइम हो जाता है. ओके, अब यहां पर देखो, प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन दैट गिवन द फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव सॉल्व्ड, बट यहां पर अल्फा बीटा कुछ ऐसे देकर इन टर्म्स, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आस्क. तो ऐसे लाइक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम ना पूछती. ओके, वी नो दैट फोर्स, अब हम अल्फा पूछ रही. सो ओके, सो व्हाट इज द फोर्स डायमेंशन? मास, लेंथ और टाइम. ओके, सो फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स का डायमेंशन, पहले डायमेंशन लिख लियो. यस, ओके, देखो यहां पर एफ फॉर फोर्स एंड डी फॉर डेंसिटी. अब यहां पर देखो डी फॉर डेंसिटी हो जाता है. सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी. तो टाइम तो जीरो हो जाता है. मास वन, वॉल्यूम, लेंथ, लेंथ पावर -3. ओके, अब इसे लाइक वी हैव टू टेक अंडर रूट. तो इसे अंडर रूट में लेना. तो कभी भी अंडर रूट में ले तो इसे पावर 1/2 ले सकते हैं. वेन एवर यू आर टेकिंग अंडर रूट पावर 1/2. तो यहां पर ओके 1/2 से मल्टीप्लाई करो. ओके, 1 इंटू 1/2. देखो ये ऊपर जो भी डायमेंशन आती है पावर से. ओके, देखो अंडर स्क्वायर रूट का मतलब क्या? पावर में 1/2 लिखना. पावर में 1/2 लिखना. देखो खाली 1/2 लिखे तो 0.5. 0.5 रूट इज नॉट इक्वल. सी वेन एवर यू विल बी हैविंग अंडर रूट आए तो पावर में 1/2 लिखना. ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू 1/2 इज 1/2. -3 इंटू 1/2 इज -3/2. ओके, 0 इंटू 1/2 इज 0. तो यहां पर अंडर रूट का डायमेंशन मिलेगा. ओके, क्लियर? ओके, देयर इज वन रूल इन डायमेंशन. तो डायमेंशन में एक रूल आता है लाइक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ओके, द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स. इसका मतलब LHS विच इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब मास, लेंथ और डायमेंशन जो भी आता है वो, यस, मास, लेंथ और टाइम दोनों भी. यहाँ 1 का तो यहाँ भी 1 रहना, यहाँ -1 का तो यहाँ भी -1, यहाँ 2 का तो यहाँ 2 रहना. ओके, देखो यहाँ पर जब दोनों डायमेंशन, ओके, फिजिकल क्वांटिटी के दोनों डायमेंशन सेम हो सकती, इसे हमें ऐड कर सकती और सब्ट्रैक्ट कर सकती. ओके, सो दिस द कंडीशन. तो एक कंडीशन कब अप्लीकेबल होता है? कब अप्लीकेबल होता है? जब जो भी फिजिकल क्वांटिटी देकर ही कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी के दोनों डायमेंशन बराबर रहना, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते. सो गॉट इट माय पॉइंट? ओके, अब यहां पर देखो, सी हियर वी हैव, अब ये फार्मूला में एडिशन है बीटा प्लस डी. ओके, सो हियर आई विल राइट डी प्लस बीटा और बीटा प्लस डी. ओके, मतलब इस दोनों को हमें कब ऐड कर सकते हैं? कौन से कंडीशन में दोनों को भी ऐड कर सकती? डायमेंशनली इक्वल रहना. तो डायमेंशनली इक्वल का मतलब क्या? इसका डी का डायमेंशन बीटा के डायमेंशन के बराबर रहना. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सी हियर आई हैव टेकन रूट डी प्लस बीटा, डेंसिटी प्लस बीटा. तो हमें दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना अगर को बोले तो उसके डायमेंशन बराबर रहना. डायमेंशन शुड बी इक्वल. ओके, अब मैं डी के जगह बीटा लिख सकता हूं. समझ में आ रहा है? देखो बीटा का डायमेंशन क्या होता है? बीटा का डायमेंशन डी के डायमेंशन के बराबर हो सकता है. ऑलरेडी वी हैव टेकन द डी डायमेंशन. ओके, सो यहां पर अंडर रूट ऑफ डी प्लस बीटा किसके बराबर हो सकता है? सी हियर, देखो ये दोनों को भी ऐड करें, दोनों का इक्वल रहना. ओके, तो बीटा का डायमेंशन किसके बराबर हो सकता है? अंडर रूट के डी के बराबर. सो व्हाट इज द डायमेंशन वी हैव? सो एम पावर, किसे तो भी समझ में नहीं आ रहा क्या? ये स्टेप समझ में नहीं आया क्या? बोलो ये दिस 2 स्टेप्स, ये दोनों स्टेप किसे समझ में नहीं आया? क्लियर?
समझ में आया? देखो हमें यहाँ पर एडिशन करना है, देखो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये रूल आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए नहीं आता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कब हम ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? दोनों डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम रहना। तो यहाँ पर भी 1 1 2 2 है, तो देखो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से मतलब इसके बराबर इन्हें होगा, तब हम ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ एडिशन होकर बोले तो इन एडिशन कर बोले तो इसके बराबर इन्हें हो सकता है, इसके बराबर इन्हें, बट हम ना इसका डायमेंशन मालूम नहीं है, तो इससे हमें क्या करती है, रूट डी के बराबर ले लेती। ओके, सो नाउ वी कैन अप्लाई, हमें क्या फाइंड आउट करना, सो अल्फा का डायमेंशन निकालना। तो इसमें से अल्फा का डायमेंशन व्हाट वी विल गेट, सो अल्फा विच इज इक्वल टू एफ इंटू अंडर रूट ऑफ डी प्लस बीटा लिख सकते हैं इसे। देखो इधर 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 शिफ्ट कर लियो, डन। ओके, सो अल्फा विच इज इक्वल टू व्हाट इज एफ, एफ का डायमेंशन m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, क्लियर। ओके, d प्लस बीटा का डायमेंशन यहां पर है देखो। ओके, m पावर 1/2 l पावर -3/2 3/2 और t पावर 0। अब इसे मल्टीप्लाई करो, देखो जब बेस सेम रहती पावर विल बी एडेड। ओके, खाली पावर को ऐड करना, सो 1/2 प्लस 1 3/2, तो m पावर 3/2 होता है ये। देखो इन्हें 1/2 प्लस 1 3/2, तो यहां पर -3/2 प्लस 1 -1/2 l पावर -1/2 t पावर -2 प्लस 0 इज t पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर अल्फा। ओके, तो अल्फा का ये बनता डायमेंशन फार्मूला। ओके, नाउ आई टेल द ऑप्शंस, m पावर 1/2 l पावर -1/2 t पावर -2 है, m पावर 1/2 l पावर -1/2 t पावर -2। ओके, m पावर 3/2 l पावर 1/2 t पावर 2, m पावर 3/2 l पावर -1/2 t पावर -2। ओके, सो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट वन। ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चन सुनना, नीट में बहुत ज्यादा पूछती दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देखो ऐसा और एक क्वेश्चन, डन। The velocity v of a particle is given. Okay, the velocity of a particle, the velocity v of a particle is given in terms of time. The velocity of a particle v in terms of time t as v equal to at plus b by t plus c, ऐसा एक इक्वेशन है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर, डायमेंशंस ऑफ ए बी सी, ए का डायमेंशन, बी का और सी का डायमेंशन निकालना। ओके, अब ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज एल स्क्वायर एम एल टी पावर -2, एल स्क्वायर एम एल टी पावर माइनस, इसका मतलब क्या, इन्हें ए इन्हें बी इन्हें सी, देखो 3। ओके, सो ऑप्शन बी इज एल टी स्क्वायर एल टी एल, एल टी स्क्वायर एल टी एल। ऑप्शन सी इज एल टी पावर -2 एल टी।
Option D is L, LT, T square. Yes. अब देखो यहाँ पर they have given four options. Okay. So out of this four option we have to calculate which one is the correct one. अब this is the equation. ठीक है, तो एक वेलोसिटी का इक्वेशन देकर ही इस वेलोसिटी के इक्वेशन में ए बी सी के डायमेंशंस निकालना. ओके, सो फर्स्ट अब यहाँ क्या साइन है देखो, प्लस. प्लस का तो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, ए टी विच इज इक्वल टू बी बाई टी प्लस सी. करेक्ट, बराबर हो सकता है ये. अब इसमें से एक्सिलरेशन का क्या हुआ, ये फॉर एक्सिलरेशन. ओके, मास, लेंथ और टाइम. एक्सिलरेशन इज L1 टी पावर -2. अब AT का मतलब क्या हुआ, ओके, सो m0 L पावर 1 टी पावर -2, यहाँ टी पावर 1 -2 + 1 इज -1 हो जाता है. क्लियर, ओके. अब यहां पर देखो लाइक एक्सिलरेशन L टी पावर -2, यहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखो, L पावर 1 टी पावर -2, सी ऑप्शन दिख रहा है. करेक्ट, बट दूसरा भी कैलकुलेट कर सकती हूं तुम्हें, बट ये जो एक्सिलरेशन का दिख रहा है, ये एक्सिलरेशन का इसके साथ मैच हो रहा है, दूसरा कौन सा भी मैच नहीं हो रहा है. ये कैलकुलेट करे तो बस तुम्हें. ओके, बट आई टेल अदर स्टेप्स आल्सो हाउ टू डू इट. ओके, अब यहां पर देखो, नेक्स्ट वी हैव, ओके, सो B बाई T प्लस C. ओके, सो B बाई T प्लस C. ओके, सो B बाई T प्लस C किसके बराबर हो सकता है, AT के बराबर. ओके, सो m0 L पावर 1 T पावर -1. करेक्ट, yes sir, no. So here, okay, C, okay, B बाई, ओके, T का डायमेंशन T हो सकता है. ओके, प्लस का मतलब क्या, दोनों का डायमेंशन इक्वल रहना. प्लस का मतलब क्या, इसका इसका डायमेंशन इक्वल रहना. ओके, सो विच इज इक्वल टू m0 L पावर 1 T पावर -1. ओके, अब यहां पर B बाई T का डायमेंशन T पावर 1 हो सकता है. करेक्ट, मतलब व्हेन यू टेक दिस T C इक्वल करके बोले तो T का डायमेंशन भी क्या होता है, T पावर 1 हो सकता है, और C का डायमेंशन भी T पावर 1 हो सकता है. यस सर, नो. ओके, अब यहां से देखो, वी गॉट C का मतलब C का डायमेंशन क्या मिला, T पावर 1 मिला. इन ए, इन बी, इन सी का डायमेंशन भी T पावर 1 मिला, यहां पर भी T पावर 1. व्हाट इट, देखो ऑलरेडी हमने ये तो मिल गया एक्सिलरेशन का. करेक्ट, L पावर 1 T पावर -, C का भी मिल गया हमारा T पावर 1. ओके, नेक्स्ट क्या बच कर है, B. ओके, सो व्हेन यू टेक दिस वन, ओके, so B which is B by T plus C. Okay, B by T plus C which is equal to, okay, अब ये देखो दिस टर्म, यू लुक एट दिस, सो B which is equal to, इधर है तो मल्टीप्लाई में आता है T plus C. ये जो T plus C इधर लेकर आओ. ओके, अब यहां पर B किसके बराबर हो सकता है, T which is equal to C के बराबर हो सकता है. तो टी सी का वैल्यू क्या है, टी पावर 1. सो बी किसके बराबर हो सकता है, टी पावर 1.
t पावर 1 है, l पावर 1 है. Okay. C option is LT square LT. ओके बट ऑप्शन क्या मिल रहा तुम ना. ओके तो इसका ऑलमोस्ट ये दो मैच हो रही. सो बी का ऑप्शन क्या हो सकता है तुम्हें, गेट एज 1. तुमने कौन से तो भी एक में यू कैन फाइंड आउट द एक्सिलरेशन. ये बी सी कैलकुलेट करना समय. तो तीनों का ऑप्शन मिल रहा है. ओके बट अभी सॉल्व करना, इट विल टेक सम टाइम. इंस्टेड ऑफ हमने आंसर मिल गया, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है खाली हमने सॉल्व करने का आइडिया मिला तो बस. यस डन. ओके I'll give one question, you solve this. ओके बी का डायमेंशन पूछ रही. सो दिस इज द इक्वेशन ए बाई बी विच इज इक्वल टू एम. ए का मतलब क्या होता है, फोर्स. सी द बोर्ड. ज्यादा बातें करी ना तुम्हें. टुडे आई एम सीइंग यू फर्स्ट क्लास यू आर अटेंडिंग. यस आज इस पहली क्लास अटेंड कर रही क्या. आई एम सीइंग इट टुडे ओनली फर्स्ट क्लास. देखो कंसंट्रेट करो. फ्रॉम दैट टाइम यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स. ओके सो ए बाई बी विच इज इक्वल टू एम. ठीक है तो व्हाट इज ए मींस फोर्स. ठीक है और एम क्या हो सकता है, लीनियर डेंसिटी ऑफ मास. तो लीनियर डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है एम बाई एल होता है. तो बी का डायमेंशन निकालना. ऑप्शन ए इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर. ऑप्शन बी इज same as that of work. Option C is same as that of momentum. Option D is same as that of square of velocity. तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो सकता है. ओके सो ट्राई टू सॉल्व दिस. आई विल कम इन 10 minutes.
सॉल्व करना क्या है कैसा बोलो actually want to finish this chapter today also but our like 10 to 15 questions in statement and assertion they I thought finish karko I start last of questions start करेंगे बोलो because questions solve करने में ज़्यादा time लग जाता है but 1.5 hour is not sufficient ठीक है we'll continue next class